Welcome to this blog edition of Urban Tales. I'm Jagdish Singh Sajwan. Right now I'm standing just in front of the entrance to Sukhna Wildlife Sanctuary, and the location is Nepli side entrance gate. And in the backdrop you can just see the all fun and fair and the reception desk which has been just set up here because today is the first day of nature and wild track that is on 2nd of October 2023, because this Sukhna Wildlife Sanctuary has been closed for 2 months consecutively during breeding season. Welcome to this blog edition of Urban Tales. I'm Jagdish Singh Sajwan, and right now I'm sitting at the entrance gate of Nepli, which is basically gateway to Sukhna Wildlife Sanctuary, and beside me sitting Mr. TC Nautiyal. TC Nautiyal. He is a Chief Conservator of Forest, UT Chandigarh, and today is the day for nature and wild track that is on 2nd of October. So welcome, sir. Tell me something about this. Thank you. The Department of Forest Chandigarh organizes this track every year on 2nd of October. Okay. And this particular track is of around 10 kilometers. Okay. And is very popular with the citizens of Chandigarh and nearby Tri-City area. Okay. And they enjoy it very much. So we make it sort of wildlife awareness event, and tell people about the importance of wildlife, importance of forest, and the importance of conservation as a whole. So this is an opportunity for us also to interact with large number of people, and thereafter then we organize this event on a monthly basis. Okay. But this is when it starts after rainy season. Okay. As a part of Wildlife Week celebration. Okay. When we compare the interest level of people for this kind of nature walks, you have been to various parts of India. How do we stand, the people of Tri-City? Tri-City is that way very special type of setup here. People are well educated, they are aware, they are very conscious about conservation and wildlife. So the degree of participation here is very enthusiastic, very high. That is why we keep it on a monthly basis, because it's very popular. The citizenry of Chandigarh is really into conservation. But then we keep them giving more opportunities and more interactions also, so that that spirit continues. What about the number of registration count today for this walk? Registration was around 2,000. I think around 1,1500 people my guess is they have already gone. So 1,500 around. Today 1,500 people are participating in this. Are participating. Okay. So I was under the impression that the maximum strength for one day is 500.
This is a particular event. Okay. 2nd of October is a particular event when we do not have that rider. Okay. Hereafter, I will allow only 500 to 600 people at a time. Okay. But this time, because it's a wildlife week and more number of people come after rainy season, so we do away with that rider. And right now I am on the way to nature and wild track at Sukhna Wildlife Sanctuary. We have just made an entry from Nepli Gate, and we have just the major reception area, and right now we are just waiting for our batch. अर्बन टेल के इस ब्लॉग संस्करण में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं जगदीश सिंह सजवान और इस वक्त मैं खड़ा हूं नेपली हिल साइड से जो मुख्य प्रवेश द्वार है नेचर वॉक एंड विल्ड ट्रैक सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। और इस वक्त हम प्रतीक्षारत हैं। जो हमारा बैच है उसकी जो संख्या है वो अभी उतनी पर्याप्त नहीं है कि उन्हें एक ऑफिशियल गाइड के साथ बैच में भेजा जाए, और हम इंतजार कर रहे हैं उस संख्या का पूरा होने का। और मैं इस वक्त हूँ सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेपली हिल साइड, जो मुख्य प्रवेश द्वार है इस वन्य अभयारण्य का। आप ये बना रहा हूँ सर, मैं वेट कर रहा हूँ आप क्रॉस होंगे सर। मैं इसलिए साउंड नहीं दे रहा था, मैं कोई ना कोई तो देगा वॉइस साउंड।
कौन सा गाँव है आपका? महादेवपुर। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब जिस वक्त ये लैंड एक्वायर हुआ था हमारा, हाँ हमारा गांव पे अंदर था। 1964 में हम यहाँ थे पहले। ओके। और उसके बाद 1964 के बाद हम जब ये बना वर्ल्ड बना, उसके बाद हम बाहर नहीं, एक्चुअली 2 स्टेज पे इसका एक्वायर हुआ था। एक तो 2600 हेक्टेयर था, हाँ। फिर 800 हेक्टेयर पंजाब से इन्होंने लिया था, उसमें थे। नहीं 26 वाले में, 2600 वाले में थे आप? अच्छा, हमारा गाँव यहाँ था पहले। ओके ओके। गाँव गाँव का नाम? पोम्बला गाँव। आपका नाम? केंदू वाला। मेरा नाम इस्माइल है। अच्छा, मतलब इस वक्त हम जो खड़े हैं, हाँ। तो आपके ये जो गांव था, हाँ, उसके पास की, हाँ, हाँ। पास का पहले से। अच्छा, यहाँ पीछे गांव लेने का, ये हाँ, कई गांव थे यहाँ पे, नित्य वाला, अच्छा, उसके बोड़िया, पोम्बला गाँव, उससे थोड़ी सी आगे जाके गांव था हमारा। ओके। गाँव लोग तो हो चुके हैं अभी तो। ये बन गया वर्ल्ड वाइड सेंचुरी बन गया। हाँ जी, हाँ जी। यूटी अंडर आ गया। अच्छा हम चल गए हरियाणा में। अच्छा, अब इस वक्त आप नाउ यू आर पार्ट ऑफ हरियाणा? बॉर्डर है। अच्छा। ऐसे चंडीगढ़ है, ऐसे है। तो आपके तो गांव में बोलते हैं जो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आप? हाँ, हमको ऐसे ही है। नहीं, पर आप तो कम आते हैं, टाइम नहीं लगता। आज बड़ा मन है। इनमें से कौन लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? पहले में नहीं तो इसका कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे। ये कॉन्ट्रैक्टर है इसका, ये अच्छा जी। जमीन नाम है इसका। इतने चेक डैम बनते हैं। अच्छा, चेक डैम। अच्छा ये ऐसे जो लेक है सुखना लेक में गाद ना जाए, अच्छा, पानी वाटर की। हाँ जी, हाँ जी। चेक डैम ये इनके अंडर है। अच्छा, चेक डैम वाला पार्ट ही देखते हैं। जहाँ हमारे गाँव थे वहाँ हमारे दादी वगैरह आते थे। अच्छा, पीछे अभी जब फ्लड वगैरह आए थे उस वक्त चेक डैम की क्या पोजीशन थी? फुल थे सारे? फुल अच्छा, टूट के। क्योंकि उस वक्त मैंने देखा वो खुड्डा लोर में पानी आ गया था। अच्छा अच्छा। ये टूट के चेक डैम। अच्छा, यदि ये चेक डैम ना होते तो क्या होता उस बरसात में? तो झील का टूटने का या कुछ भी नहीं, ना टूटे। वो पानी और भी कहीं जा सकता था। और कहीं का बल्टाना ओवर कर दो, बल्टाना को नहीं किशन वो कर तो चलो उस साइड का, पर कहने वाला क्या आंदा भाई पानी। ये पानी नहीं खुड्डा लोरा साइड नहीं जाता है? नहीं, वो अलग है। वो अलग है। वो अलग है। अच्छा, ये क्योंकि सारा झील का। वो उसके भी कुछ पार्ट थोड़े फ्लडेड हो गए थे ना स्टार्टिंग में, पुल के साथ वाला। भाई ये पानी ज्यादा इसका है। अच्छा ये नेपली फॉरेस्ट है, उसका पानी ज्यादा है। अच्छा, ये सारा का सारा आपका डिस्चार्ज वहाँ जाता है? हाँ, झील पे जाता है। झील तो है मजबूत है। अगर झील वो ना होता, नहीं, यदि ना होते तो किशनगढ़ नहीं बचता। अच्छा, यदि किशनगढ़ बल्टाना। किशनगढ़ सब जाता है। हाँ, अच्छा, अगर झगड़ा नहीं। क्योंकि फ्लड गेट उस वक्त सुखना के खोलने पड़े थे। पूरे 40 साल में पहली बार खोले हैं। अच्छा जो वहाँ पे खड़े गेट हो रहा है ना, हमारे गाँव के ही है। अच्छा वो बोल रहे हैं 40 साल हो गए काम करते हुए, अच्छा। पहली बारी 90 डिग्री पूरे खोले। तो मतलब आपके हिसाब से जो चेक डैम वाला कंसेप्ट था ये अपने आप में कामयाब? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। ये कौन सा बैच है? अच्छा, फोर्थ है। अयो, ये लास्ट था? अच्छा, 5वां वाला जी। Welcome to this blog edition of Urban Tales. I am Jagdish Singh Sajwan, and right now I am at Sukhna Wildlife Sanctuary. Yes, and this particular location is the highest point on Nepli Hillside Forest, and it is called Watchtower, or also popularly known as Howman. And I'm just panning my camera around so that you can have the very clear view of the lush green Shivalik foothills around me. This is the second highest watchtower on Nepli Hillside Forest, and the highest one is on the Kansal Forest side. I'm just panning my camera around, and in the backdrop you can have the view of panoramic view of Shivalik foothills.
Welcome to this blog edition of Urban Tales. I'm Jagdish Singh Sajwan. Right now I'm at Sukhna Wildlife Sanctuary, and this particular location is the second highest point in this Nepli hillside forest, and this is basically a watchtower, and it's also known as How Mahal. And the highest one is on the Kansal forest side, and beside me are the fellow visitor or trekkers which have just joined this nature and wild trek today, and basically they are from nearby villages, and long way back their ancestral land which belongs to their villages or maybe their panchayats was acquired just to save the Sukhna lake, and almost 3200 hectare vast wildlife sanctuary was created after acquiring lands from the villages nearby. And luckily we have few fellow trekkers who are from those villages also. आपका नाम सर? अंजला। अंजला। कौन से गांव से आप यहाँ पर? यहीं से महादेव से। अच्छा, आपका लैंड एक्वायर हुआ था और आप शाहिद कहाँ से? यहीं से महादेव सारे महादेवपुर से? ये महादेवपुर थे सारे। अच्छा, सारे महादेव। ये कैंबरा से, ये कैंबरा यूपी के अंडर आता है, यूपी के अंडर कैंबरा गाँव है, कैंबरा। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पिछले इस जो अभी बरसात गई है इसमें क्योंकि जो बहुत सारी जगह पे हमारे पास फ्लड का सिचुएशन था, और इस सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे चेक डैम्स हैं, और उन चेक डैम के प्रबंधन से जुड़े हैं यहाँ पर जो चेक डैम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर ये हैं, ये है। तो इनके अनुसार जो पिछले दिनों यहाँ पर चंडीगढ़ के आसपास एरिया में जो बाढ़ की स्थिति थी, जो बहुत बरसात हो रही थी, यदि ये चेक डैम ना होते तो इनके हिसाब से जो उस चंडीगढ़ के नज़दीक जो एक सब अर्बन लोकेलिटी है, किशनगढ़ है, ठीक है, तो वो उसकी स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती थी, क्योंकि 40 सालों में पहली बार सुखना के सारे जो फ्लड गेट है उन्हें खोलने पड़े थे, और ये केवल चेक डैम थे जो इन शिवालिक फुटहिल्स में बनाए गए थे, जिन्होंने काफ़ी हद तक सुखना के अस्तित्व को बचाए रखा। मैं हूँ जगदीश सिंह सजवान, अर्बन टेल्स के लिए। Welcome to this blog edition of Urban Tales. I am Nepli Entry Gate, and right now I am at the Sukhna Wildlife Sanctuary. Today is 2nd October 2023, and it's the day for nature and wild trek, which is being organized by Chandigarh Forest Department. And this particular location is in Nepli. It's somewhat a midway point on the way from Nepli towards Kansal Forest area. This particular location is at Nepli, and we have already covered a distance of approximately 5 kilometers. And in the backdrop you can also see the ambulance from health department, which has been arranged just as a safeguard. And today approximately around 1500 to 1600 people have registered for this nature and wild trek. एडवेंचरस आप देखेंगे कि चंडीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता है ये वन्य प्राणी शरण्य है चंडीगढ़ का, और ये 26 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल क्षेत्र है, आपके एडजॉइनिंग में है, और चंडीगढ़ के 10% लोगों को भी पता नहीं है कि इतना सुंदर जगह और एक नेचर ने एक बहुत बढ़िया शानदार चीज़ जो है हम लोगों को दी है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर आप मैमल्स प्रजाति है ना, स्तनधारी प्राणी बोलते हैं जिनको, उनकी करीब करीब 20 प्रजातियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है, इस वन्य प्राणी श्रेणी में पाई जाती है, जिसमें लार्ज कार्निवोर में आपको कॉमन लेपर्ड, तेंदुआ बोलते हैं जिसको, वो भी मिलता है इस सेंचुरी में।
और 11 प्रजाति रेप्टाइल्स की मिलती है। रेप्टाइल जानते हो, ये जो सांप है वो इस सेंचुरी में 11 प्रजातियां मिलती है। पाइथन यहाँ बहुत बड़े बड़े पाइथन मिलते हैं। पिछले साल हमने ये एक रेस्क्यू किया था, 13 फुट का पाइथन था, अजगर। कितने लोग आए हैं इस बार ये लोग? इस पेरे अभी पूरा आंकड़ा तो हमें भी नहीं आइडिया है कितने, अभी शाम को बताएंगे क्योंकि अभी भी रजिस्टर हो रहे हैं। अच्छा 2 मिनट आपका नाम? बबलीन कौर। अच्छा, ये आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? अब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ग्रेट। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं, तो आपको पता कैसे चल रहा है यहाँ पे टूर ऑर्गेनाइज होता है? किसने बताया आपको? हम ब्रदर के साथ आएंगे। अच्छा, ब्रदर कहाँ है आपके? मेरे आपका क्या यूट्यूब चैनल है? फिर हैं? ऐसे ही नहीं, नो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने ऐसे इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं आप फिर? नहीं, सच में नहीं है। नहीं, इसका इनका लगता है। अरे वेरी नाइस, इनका वेरी लगता नाइस। है। आपको लगता है? फिर बेटा हमसे ये पूछो, हाउ टू गेट इनटू द फॉरेस्ट सर्विसेज, है ना? क्योंकि अगर आपको नेचर से प्यार है तो यू प्रिपेयर फॉर द एंट्री इनटू द डिपार्टमेंट। सर मेरा प्रश्न अब ये, हाँ अब तो खैर मैं तो नहीं हो सकता, पर हाँ, हाउ टू बिकम ए फॉरेस्टर? फॉरेस्टर तो आप बाय पैशन, एवरीवन इज द फॉरेस्टर हु आर विजिटिंग इन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप भी फॉरेस्टर है, हम भी फॉरेस्टर है, सब फॉरेस्टर है। लेकिन एज ए कैरियर अगर आपको करना है तो आपको 2-3 चीजें, एक आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं, Okay. एक आपका स्टेट सर्विस कमीशन रहता है, एक आपका स्टेट सिलेक्शन बोर्ड होता है, और एक आपकी डिपार्टमेंट लेवल की में रिक्रूटमेंट होती है। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे जाना चाह रहे हो। अच्छा, जो स्टेट लेवल से एंट्री करते हैं उनके पास चांसेस होता है कि वो, जैसे होता है ना अभी SCS IS बन जाते हैं, PCS IS बन जाते हैं। IFS बनने के जो स्टेट लेवल से होता है, स्टेट लेवल में 2 तरह की एंट्री होती है। एक तो आपके एक सीधा आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज रहता है, Okay. एक आपका स्टेट लेवल की कैडर और होता है रेंज फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, Okay. RFO उनका रहता है। तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के थोड़े जल्दी IFS बनते हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थोड़ा लेट IFS बनते हैं। अच्छा, यदि हम इस डिपार्टमेंट की वर्किंग को कंपेयर करें इन्फोर्समेंट हाँ जी। दूसरे इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, यहाँ पर स्ट्रेस लेवल हाँ जी वहाँ से सर प्लीज कम बैक। जी। मतलब यदि हम और इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कंपेयर करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सर्विस को, तो उसका एक कंपैरेटिव ओवरव्यू दे सकते हो स्ट्रेस लेवल? देखेंगे सर तो एक हिसाब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट सर्विसेज भी एक हिसाब से पैरा मिलिट्री टाइप की सर्विस Okay. है, यूनिफॉर्म सर्विसेज है। ओके, तो क्या कहते हैं उसमें, ये क्या कहते हैं, हाँ जी, इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? बस टीम है ना, सारी टीम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम है, टॉप टू बॉटम जितने भी लोग काम करते हैं तो पूरा मतलब तसल्ली से लगे रहते हैं काम में लगे। आपका नाम से? एंड यू आर पोस्टेड एज रेंज फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो ये हायरार्की होता है, इसका पोस्ट क्या होता है, मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं? तो ये जो आपके इन्फोर्समेंट के जो पर्सन हैं उनके लिए, जैसे चंडीगढ़ पुलिस है उनके लिए जैसे रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रहा है, ये इस तरह का आपके पास भी होता है? अच्छा, जो सेंट्रल बोर्ड के जो है आपको, अच्छा, मतलब मैं सोचा कहीं यहाँ पर कैंपस कॉलोनी टाइप। ओके, थैंक यू सर।
This is also a sort of watchtower. We have already on the descent. We have just crossed through the second highest watchtower on the hill, and we are almost a little bit more than midpoint. I'm just panning my camera around so that you can have a very clear and panoramic view of Shivalik foothills around it. Today is 2nd October 2023, and the first nature and wild track. This is being organized by Chandigarh Forest Department. I'm just panning my camera on so that you can have a panoramic view of Shivalik Hills. Lush green. State animal of Chandigarh. Common name Indian grey mongoose. Scientific name I don't know. Family Herpestidae. About me, I am a carnivorous animal. I am commonly found in open forests, scrubs, lands and cultivated fields. I like to stay close to human habitation. Burrows, hedgerows, groves of trees, bushes and even drains are the places where you can see me often. Rats, snakes, birds, eggs and lizards are my favorite food. Department of Forest. आता है फोटो ले आते दूरबीन पे Again, welcome to this blog edition of our contents. I am TC Nautiyal, and right now I am at Sukhna Wildlife Sanctuary, and this particular location is the highest watching point and also known as the Hawm Head. And so the second highest point we have just crossed. We are on the descent now. We have already covered a distance approximately 6.5 kilometers till now, and the remaining 3.5 kilometer journey is just ahead. This is the second highest watchtower on this nature and wildlife track, and the second highest we have just crossed, and we have already covered a distance of approximately 6.5 kilometers, and the remaining journey of around 3.5 kilometers just ahead. I'm just panning my camera around so that you can have the very clear view of panoramic Shivalik foothills around me. This is the watchtower. आप कहाँ से आए हो? योगा क्लास। चंडीगढ़ से। तो योगा क्लास यहाँ जंगल में क्या कर रही है? ट्रैकिंग के लिए आई है। हम आए हैं 222 सेक्टर 2070। अच्छा। भाई इसने एड्रेस बता दिया, इसके घर में डकैती करके आना। आप क्या करेंगे? नहीं, एक्चुअली यहाँ खजाना भी छुपा हुआ है। अंकल दे बता दो। पॉकेट मनी भर जाएगी। इधर से आ जाओ, गाड़ी गिर जाओगी।
This is the second last point for light refreshment, and the name of this particular location is Memli. And before that, second point was Nathiwala, where light refreshment was given. And basically there are three such locations. One is light. One more check dam. You can see the water-filled check dam right amidst Shwalik foothills in Sukhna Wildlife Sanctuary. Welcome to this vlog edition of Urban Tales. I am Jagdish Singh Sajwan, and right now I am at Sukhna Wildlife Sanctuary, and this is the almost final leg of this nature and wild trek that is being organized on the 2nd of October 2013 at Sukhna Wildlife Sanctuary. And we have just entered from Nepli hillside, and after crossing and trek distance of almost maybe around 8 kilometer plus, we are almost on the last leg of this our trek. And this is this particular location is sort of a watchtower, and it may be the second or third highest watchtower on this trek. And in the backdrop you can just see the this is almost the last leg of this nature and wild trek that is being organized on 2nd October 2013 at Sukhna Wildlife Sanctuary. This is the last leg point. Yes.
Again, welcome to this blog edition of Urban Tales. I'm TC Nautiyal. Right now, we are at Kansal Log Hut. It's in the that side of Kansal Log Hut, and this is also a culmination point of this nature and wildlife track that's being organized by the Department of Forest. Around me, you can see the last batch of the visitors who have registered for this today event. Wildlife Week is being celebrated from 2nd of October to 8th of October, and this was the first day of this nature and wild trek after a gap of almost 2 months, because this whole sanctuary was closed for almost 2 months. It's being a breeding season, and before that, in the month of summer, generally visitors are not allowed to trek in this track area. So basically, this is the Kansal Log Hut. You can see in the backdrop, it's a Kansal Log Hut, and this green patch of grassy land area surrounded by the lush green. Welcome to this blog edition once again, and right now we are at Kansal Log Hut, and this particular spot is the last culminating point of this one day nature and a wild trek that is being organized by Department of Forest and Wildlife Chandigarh, and today is the 2nd October 2013, and this is a part of a 1 week long celebration of wildlife week, and this whole event was organized by the Department of Forest and Wildlife Chandigarh. And in the backdrop you can see the Kansal Log Hut, and basically it's going to be a last culminating point of this whole 9.5 kilometer trek. Today we started from the Nepli side, that's the main entrance to the Sukhna Wildlife Sanctuary, and this is the last culminating point of this today trek, and this some refreshment was given at this point that was also being arranged by Chandigarh Forest Department, and now we are approaching towards the last leg of our this today trek, and